We finished one story yesterday. Story says, the last love. It was the start of modern aviation. Before that, before 1909, that air journey. Before that air journey, people didn't have the option to travel by plane. Today, we have that option. Fast travel means travel by plane. So it was the beginning. It was the first air journey. And since then, things changed, right? Today, we have fast aeroplanes that take us long distances. All these things happened because of that particular incidents. Today, we are going to talk about the first men on the moon. On July the 16th, 1969, on July the 16th, 1969, at 9:30 in the morning, Apollo 11 lifted off from the Kennedy Space Center in Florida. At 9:30 in the morning, Apollo 11 lifted off. Apollo 11 lifted off. In the earlier text, we had the plane took off. The Apollo 11 lifted off, went up like this. Rockets go like this. They lift off. They lift off. They lift off. Okay. Planes take off. Okay. Very commonly we use these phrases. Apollo 11 lifted off. मतलब क्या पता चला बेटा, जो मैंने अभी सिखाया, मैं 2-3 लोगों के पास जाऊंगा खाली ये जानने के लिए लिफ्टेड ऑफ मतलब क्या पता चला। मैंने इशारे करके दिखाए थे, हिंदी नहीं दी। श्लोक क्या समझे? हाँ, तो मैंने क्या फर्क बताया तुम्हें दोनों में? आज हमने लिफ्टेड ऑफ यूज किया, कल हमने टेक ऑफ यूज किया था, राइट? लिफ्ट ऑफ और टेक ऑफ में कुछ फर्क पता चला? भी मैंने हाथ के इशारे से सिखाया। रॉकेट कैसे क्या करता बेटा? लिफ्ट ऑफ। रॉकेट लिफ्ट्स ऑफ, प्लीज, राइट? मीनिंग समझ में आ गया था ना? Apollo 11 lifted off from the Kennedy Space Center, in Florida. From the Kennedy Space Center in there were 3 astronauts. There were 3 astronauts. The plane took off from a field. The plane, yesterday we read, the plane took off from a field. This rocket, Apollo 11, lifted off from the Kennedy Space Center. Where is it? Where is Florida? In America. There were 3 astronauts on board. Remember the phrase on board? Yes. Remember the phrase on board? People present on a transport, we say 3 people. Remember, we read the sentence, and a rocket landed or a spacecraft landed on the moon, but there were no astronauts on board. It means there was nobody present there. So there were 3 astronauts on board: Neil Armstrong, Buzz Aldrin, and Michael Collins. The enormous rocket took 3 days to complete the 250,000 miles to the moon. The enormous rocket took 3 days to complete the 250,000 miles to the moon. What is the distance
to the moon from this sentence? 2.5 lakh. Yeah, 250,000 miles to the moon. So the journey was, how far was the journey? 250,000 miles. Why don't you guys come over here instead of going there? You could come there too. No? Boycotting somebody, हाँ? किसी को boycott कर रहे हैं? हाँ, कर तो रहे? नहीं नहीं, वहां नहीं बैठना. अच्छा ठीक, कोई बात. बाइकआउट करो, हम तुम्हारे साथ हैं. बाइकआउट करो, हम तुम्हारे साथ हैं. क्योंकि बाइकआउट किसका हो रहा है? किसका हो रहा है? आफिया का. इसीलिए अगर कोई अश्वी का बॉयकॉट करने का सोचा भी तो फिर सोच लेना, मेरे से बुरा कोई ना होगा. ऑलराइट, बट अफिया का बॉयकॉट करो, हम तुम्हारे साथ हैं. ओके. ऑलराइट अफिया, move a little bit to your right so that I can see you. And Afia, pay attention to what I'm saying. Pay attention to what I'm saying very closely, okay? Very closely. Afia, smile. Yeah, good. Thank you. I like your smile. Okay. So where were we? Where were we? The enormous rocket. The enormous word was used before. Tell me the meaning of enormous. Good. Huge. Very big. Enormous means very big. Okay. Enormous. Do you remember where this word was used, enormous? Can anyone recall? Thank you. अच्छा, तुम मुझे बताओ. उसने मुझे कहा कि हम दिन भर पढ़ते हैं सर और इंग्लिश में बात भी करते हैं. फिर ये जवाब तुम दे रही हो, वो क्यों नहीं दे रही है? पता क्लियर करते हैं आफिया. इसलिए मैंने कहा था अगर किसने अश्वी का बाइकआउट करने का सोचा भी तो मेरे से बुरा कोई ना होगा. अब बताओ आफिया, ऐसा कैसे हुआ? यू क्लेम दैट यू आर स्टडिंग एट होम, राइट? आई सेड ओके फाइन. व्हाई डिडंट यू रिमेंबर? ऐसा क्या था? इनॉर्मस वर्ड उसको क्यों याद है? और जिसको भी ये नहीं याद है, खाली आफिया के नहीं, सारे लोग से मेरा सवाल है, आपको क्यों याद नहीं है? पता है? सिर्फ एक वजह से. जब आप क्लास में मैं कोई चीज सिखाऊं तो उस समय आपका इंटरेस्ट किस चीज में है? राइट? अगर आपको टीचर से सीखने में इंटरेस्ट, आप नहीं बोलेंगे. अरे यार, आई वॉज इन क्लास 5th और उस समय उन्होंने मुझे बताया ह्यूमस, मिट्टी में ह्यूमस पाया जाता है. आज तक मेरे दिमाग में बैठा है, मिट्टी में ह्यूमस पाया जाता है. वो मरे मरे छोटे छोटे जानवर और ये सब चीजें होती है ना, जो जमीन को, मिट्टी को उर्वरा बनाती हैं. ठीक है. अरे ये वर्ड भी मुझे याद, वही तो, उर्वरा. लाइफ में कौन बोलता है उर्वरा? तो स्टिक कर जाती हैं बातें. लेकिन भाई ऐसी कई बातें हुई क्लास में जहां पर मैं स्टिक नहीं कर पाया बिकॉज आई वाज नॉट दैट फोकस्ड. तो बेटा, सब लोग को एक ही सलाह है मेरी, क्लास में जब आप हो पूरी तरह से फोकस्ड रहो और थोड़ा बहुत रिवीजन घर पे, थोड़ा बहुत, हाफ एन आवर, 40 minutes, and that's more than enough. You will remember most of the things, okay? Enormous means huge, and the word was used in unit 4 or 5 when we talked about the window, enormous windows in a hotel, right? In the White House, no, it was the main book, the practice book story. There was a jail, prison, and hotel, which was actually a prison, Malmaison Hotel. Okay. तो ये चीज मैं बता सकता हूं, मैं काफी समय से पढ़ा रहा हूं ना, तो कुछ चीजें बताता हूं जो कहते हैं ना टेंडेंसीज होती हैं. जो स्टूडेंट सक्सेसफुल होने वाले होते हैं उनको पीछे की कहानियां याद रह जाती हैं. ऐसा नहीं कभी किसी ने पूछना है उस कहानी से कुछ, लेकिन आप इंग्लिश के वर्ड्स याद रख लिए उसी बहाने. इनॉर्मस विंडोज. और आप में से कई लोग के लिए इनॉर्मस अभी पहली दफा आ रहा है क्योंकि आप भूल चुके थे कि ये पहले भी आपने पढ़ा था. एम आई राइट? ये चीज को अवॉइड करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू आर फुली फोकस्ड. एंड रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स नॉट योर face that matters that towards me. Mind. Are you really thinking about what I'm saying? Or you're occupied with some other thoughts? I will not know. मुझे पता नहीं चलेगा if you have some other thoughts in your head, because there is no machine that can read the thoughts. Okay. I can look at your face, maybe you're looking at me and you're smart, you're looking at me, but you are thinking about something else.
How would I know? You're making an eye contact. Yes, I asked her to move it to her right so that she can make an eye contact with me. But sometimes you can be smart. You can make an eye contact with me and still think about something else. And then what can I do? My abilities are limited. I cannot really read your mind, what you're thinking. So it's important that you guys are listening with that attention. And these are interesting stories. When the stories are not interesting, I can understand. Okay. So the enormous rocket was a huge rocket. The enormous rocket took 3 days to complete the 250,000 miles to the moon. The enormous rocket took 3 days to complete the 250,000 miles to the moon. Got it? So complete the 250,000 miles to the moon. It means the distance between the Earth and the moon, the journey was 250,000 miles. That was the distance. And the rocket covered that distance in 3 days, traveling at 6 miles per second. Look at the speed of the rocket. 6 miles per second, which is 21,600 miles an hour. Okay. So 60 years ago, our maximum speed was 40 miles an hour. The plane journey, the first plane journey, the first air journey. How fast? What was the fastest speed? 40 miles an hour. That was our limitation of technology, right? The plane could not go faster than that, 40 miles an hour. Within 60 years, we were capable of flying at a speed of 21,600 miles an hour. From 40 miles to 21,600 miles within 60 years. 6 miles per second. So what did you think? How did that happen? कैसा हुआ ये? They improved the technology of aviation. Because कैसे rockets कैसे जाते, क्या speed पकड़ता है, क्या करना होता है, we don't know. We don't know. We are laymen. We don't know. But we are laymen. We don't know. But those people, experts, they started improving the technology very fast. Within 60 years, from 40 miles to 21,600 miles. From that time, 1970, 50 years have passed, right? We have not been able to, yes, please come in. Let's Google. Please come in. Let's Google the fastest speed. We have a chair here. Come. The fastest man-made object. Guys, today NASA's Parker Solar Probe, okay, it is the fastest man-made object in space, okay, the fastest till date. And you know the speed of that thing is 349,736 miles per hour, nearly 4 lakh miles per hour. 4 lakh miles per hour. Okay, guys, now think about it. That's, I think, is good. From 40 miles to 21,000 miles. 50 times. 50 times, right? It is 20 times. From 21,000 to 400 miles, 20 times. Please try and understand, I'm talking about ratio here, okay? If you understand maths. In the first 60 years, we improved how many times? 50 times. from 40 miles to 21,000 miles. So that is 50 times improvement, 50 times faster in 70 years, 60 years, right? And here in last 50 years, we have made 20 times faster, objects, from 21,000 to 400,000. If you do the mathematics, it is nearly 20 times, a little less, but it's still good improvement. It is still good improvement, not as fast. That's what I'm saying. In those 60 years,
The progress in the technology was phenomenal, was exceptional. Another word for phenomenal is exceptional. Exceptional means also very, very special, extraordinary, very good, very impressive. An exceptional student, a phenomenal student, okay? A phenomenal record, something that is phenomenal is very impressive. Got it? Moving on. So it covered the distance in 3 days and it circled the moon 30 times. The rocket circled the moon, orbited the moon, right? Can we use the verb orbited the moon? Because you learned the idea, go around, orbit, okay? Yeah, I remember telling you, I'm stuck in your orbit. I'm stuck in your. So guys, if you are studying in an engineering class, this is how you can flirt with your classmate. Yeah, you can say to her, or with her sister or mother, whatever, sorry. Okay, I'm sorry. Okay, well, let's look at this here. Where were we? It circled the moon 30 times. It orbited the moon, giving time to prepare for the landing. Giving time to prepare for the landing. Giving time to prepare for the landing. So why did they circle the moon 30 times? Because they needed time to prepare for the landing. It was not a routine activity. It was the first time that they were landing on a new celestial body, right? They were landing on the moon for the first time. It was not like climbing down the stairs, chal utar ja bhai. Okay. So they needed to do all the preparations, and for that they needed time. So when they reached there, they circled the moon 30 times. 30 बार वो गए ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, और इतने में सारी चीजें करी, तैयारी करी कि क्या क्या करना, कैसे लैंड करेंगे हम लोग, preparing for the landing. So in those 30 circles, they had a lot of time, and in that time they prepared for the landing. They prepared, उन्होंने तैयारी की। बहुत सिंपल है। जैसे हिंदी में कुछ बातें होती है हम करते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं आई डू, और कुछ बातें होते हैं हमने किया तो आई डिड, है ना? हम करेंगे तो आई विल डू। तो वैसे ही सारे वर्ब्स के साथ, हम खाते हैं आई ईट, हम खाए थे आई एट, हम खाएंगे। तो ऐसे इंग्लिश में वर्ब फॉर्म्स चलते हैं, ठीक है? जैसे हम लिखते हैं आई राइट, हम लिखे थे आई रोट, हम लिखेंगे, है ना? तो इस तरह से वर्ब फॉर्म चेंज हो जाते हैं, जैसे हिंदी में चेंज होते हैं वैसे इंग्लिश में भी। आपको लिंक कर देना है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है। अगर आपको मैं बोलूं आई रोट और आपके जहन में चला है हम लिखेंगे, तो आप गलत हैं, क्योंकि गलत पेयर को आपने लिंक किया। आई रोट बोलने से क्या दिमाग में आना चाहिए? हम लिखे थे, आई रोट, है ना? और आई विल राइट से हम लिखेंगे। तो पहले ये 3 चीजें बहुत जरूरी है समझ जाना, आई राइट, आई रोट, आई विल राइट, और बाद में और भी चीजें सीखेंगे। फिर पहले ये 3 बहुत आसानी से समझ जाइए। आई सी, आई सॉ, आई विल सी, तीनों अलग अलग टाइम के लिए। हम देखते हैं, हम देखे थे, हम तुमको पार्क में देखे थे, आई सॉ यू इन द पार्क, राइट? देखेंगे कौन फर्स्ट डिवीजन लाता है। I will see who gets the first division. I will see who scores more. देखते हैं कौन ज्यादा लाएगा, ओके? तो इसी तरह से ये वर्ब फॉर्म्स की कहानी है, सिर्फ वर्ब फॉर्म की। ये वर्ब फॉर्म इसलिए चेंज होते हैं क्योंकि आप अलग अलग बातें अलग अलग टाइम के बारे में बोल रहे हैं। जैसे आप कहना चाहते हैं कि हमको पसंद है, तो आप बोलते हैं आई लाइक, और आप कहना चाहते हैं हमको पसंद था, तो आई लाइक्ड का सेकंड फॉर्म, सारे वर्ब के सेकंड फॉर्म्स होते हैं। और आपको कहना है मुझे अच्छा लगेगा, आई विल लाइक, ओके? और करें, थोड़ा और प्रैक्टिस कर ले, ठीक है?
हम गाते हैं, जैसे इंजमाम क्लास में कभी कभी गाते हैं, इंजमाम सिंग्स, राइट? हम नहीं गाते थे क्लास में कभी। आई नेवर sang past time. I never sang in the class. Okay? Some of you will sing in the future. Some of you will sing, right? Yeah. आप में से कुछ गाएंगे। तो ये तीनों अलग अलग है, दिमाग में बैठा के रखना, आसानी होगी। फिर एनर्जी दूसरी चीजों पे खर्च कर सकोगे अगर ये क्लैरिटी है तो। इतनी सी है ना। और इसमें नेगेटिव करना भी आना चाहिए हमें। हम क्लास में नहीं गाते हैं। आई डोंट सिंग इन द क्लास। हम नहीं गाते थे। आई डिडंट सिंग इन द क्लास। हम नहीं गाएंगे क्लास में। आई विल नॉट सिंग इन द क्लास। अभी फिलहाल इतना काफी है। जब आदमी के पास पैसे की कमी हो तो ऐसे चीजें करना चाहिए कि जो काम चल जाए। तो भी काम चल रहा है, फिर इसमें और ऐड करते जाएंगे, समय बीतेगा, सीखेंगे नई चीजें, ऐड करते जाएंगे। यहाँ कोई ऐसा बैठा है जिसको ये बातें समझ में नहीं आ रही है जो अभी मैंने बोली है? सदाकत है यहाँ पे? नहीं है। सदाकत इज नॉट हियर, एंड हुशाम इज नॉट हियर आइदर। मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता हूँ कि लड़कों को एक्स्ट्रा हेल्प दे सके। जैसे आई कॉल्ड नासिर हुसैन टू माय मॉर्निंग क्लास देयर, बिकॉज आई एम टीचिंग मोर बेसिक थिंग्स। तो भाई सीख लो थोड़ा। नासिर, फायदा ही हुआ होगा कुछ। कॉन्फ्रेंस अभी ये वाली बातें भी समझ में आ रही हैं? तो हर वर्ब के साथ यही कहानी है। मैं हूं चालबाज। चालबाज अच्छा है कि नेगेटिव है ना? तो इंग्लिश में भी नेगेटिव चाहिए ना। क्लेवर तो पॉजिटिव है। हम श्रूड, श्रूड, कनिंग, कनिंग, नेगेटिव। मतलब दिमाग लगाते हो लेकिन इससे फीलिंग आता है खराब। जिसको पसंद नहीं करते उसको आप क्लेवर थोड़ी बोलते हैं, आप बोलते हैं ही इज सो कनिंग, ही इज सो, CUNNING, कनिंग। आई एम, मैं हूं, मैं था, मैं रहूंगा। आई विल बी कहां से है? यही एम और वॉज कहां से है? बी से है। क्या सबको समझ आ रही बात? आई एम, जब मैंने बोला ये एम आया कहां से? तुम हो, तुम नहीं हो। ओके। आगे कुछ हमें बोलना है, लेकिन क्या बोलना है? कोई एडजेक्टिव बोलना है, कोई नाउन बोलना है। तुम हो चालू, यू आर कनिंग। आई सेड कनिंग, फॉक्सी। ओके, लेकिन ये वर्ड हटा लेते हैं, अच्छा नहीं है। यू आर कनिंग, राइट? और बोलते हैं यू आर श्रूड। ठीक है। आप हो एक स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट। ठीक है। और बाकी जब काम धाम वाली बात है तो उसका तो अपना मीनिंग होता ही है। तुम बहुत रोते हो यार, यू क्राई अ लॉट। बड़ी कंप्लेन करते हो यार, यू कंप्लेन अ लॉट। और जो ज्यादा कंप्लेन कर रहे हैं उसको वाइन भी बोलते हैं, WHINE, WH, यू वाइन अ लॉट। नकर नकर करते रहते हो हर समय। सुना है तुमने? नकर नकर करते रहते हो, सुना है? दैट इज वाइन, WHINE, वाइन। तो आपके घर में सबसे ज्यादा वाइनिंग कौन है? मतलब नकर नकर करने वाला, वाइनिंग। हु इज द मोस्ट वाइनिंग मेंबर ऑफ योर फैमिली? Inaya is the most inviting member. See, do you agree? Then who is? Uh, she. Then your younger brother Umaid. He is the most whining. हर समय नकर नकर करता है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ऐसा नहीं चाहिए हुआ, है ना? कंप्लेन करता रहता है, राइट? A whining person complains a lot, right? In our class, who is the most whining? मेरा नाम मत लेना प्लीज। Okay, who is the most whining person here other than me? मुझे पता है मैं हूँ, because I'm the teacher. तो टीचर तो वाइन करता है, तुमने ये नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। I understand, but you understand why the teachers whine, because you understand that idea. But among you guys, who do you think is the most whining here? The most one, फिर से बेचारी को टारगेट करा। किसने नाम लिया उसका? एक तो बेचारी चुप से साइड होके बैठ गई है, फिर भी। आफिया, स्माइल। ना, दिस टाइम शी नॉट स्माइलिंग। कम ऑन, द सेम स्माइल।
Yeah, that one. Okay. Afia, I don't know why you're today you're serious. Don't be serious, please. Let us be. आप इतने एक बात मैं बोल देता हूँ भाई सब लोगों को, ठीक है? किसी भी क्लास में किसी भी इंसान को अगर हम लोग जोक बनाते हैं तो सबसे ज्यादा उसके लिए रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। मैं बता दूं सीधी बात है, क्यों? क्योंकि आपके मजाक खुशी के लिए किसी का मजाक बन रहा है और वो इंसान हंस के उस बात को ले रहा है, तो आपके मन में उसके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बस इस एटीट्यूड से देखना बातों को, क्योंकि बिना हम लोग हंसे नहीं रह सकते। तो मैं अपने आप को तो टारगेट करता ही हूँ, कई बार मैंने अपना ही मजाक बनाया, अभी देखा वाइनिंग मेरा नाम मत लेना, राइट? राइट था ना मेरा, आप खुद पे ये। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि अगर किसी एक को हम टारगेट करते हैं जोक्स के लिए, तो उसकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट होनी चाहिए क्लास में। वाई? क्योंकि वो इंसान अपनी कीमत पे आपको हंसा रहा है। डू यू अग्री? हाँ, तो ये वाला बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है? ऑलराइट, मूविंग बैक, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। क्या था हमारा? वाइन कंप्लेन। तो ये मैं 3 टाइम के बारे में बात कर रहा था। करते हैं, किए थे या करते थे, करेंगे, ठीक है? अभी प्रेजेंट में करते हैं पे, कर रहे हैं पे नहीं, कर रहे हैं पे दूसरा मामला हो जाता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आई एम टीचिंग यू, ये अलग है, ये पढ़ेंगे कुछ समय में, ठीक है? अभी हम पढ़ाते हैं पे है, आई टीच यू। हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं, आई टीच यू इंग्लिश। हम आपको मैथ्स नहीं सिखाते हैं, आई डोंट टीच यू मैथ्स, डोंट टीच यू। आई टीच यू, आई डोंट टीच यू। ऑलराइट। सरकारी स्कूल में पहले इंग्लिश नहीं पढ़ाते थे, बचपन में, प्राइमरी में, इन द पास्ट दे डिड नॉट टीच। अब ये दे कौन है? जब आपको सब्जेक्ट ना समझ में आए तो दे बोल लो, क्योंकि कोई तो होगा। समझ में ना आए बोलने का मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने कहा सरकारी स्कूल में इंग्लिश नहीं पढ़ाते थे, कौन नहीं पढ़ाता था? टीचर्स ना। लेकिन और कोई आ भी सकता दिमाग में, नहीं ना? तो अंडरस्टूड है ना? तो इसीलिए दे बोल के काम चला लो, बोलो। They didn't teach English at primary schools, at primary government schools, right? Okay. Okay, fine. Um, so it circled the moon 30 times, giving time to prepare for the landing. हम लोग को समय चाहिए एग्जाम की तैयारी करने के लिए. We need time to for the exam, to prepare for the exam. We need time to prepare for the, yeah. They got enough time to prepare for the landing because the rocket circled, orbited 30 times. Orbited क्यों बोला? हुआ. ओके. तो इसमें राइट रॉन्ग नहीं होता है, बस सही पेयर सही होना चाहिए. आपके मन में चल रहा है पीछे वाला बात, तो प्रेजेंट वाले से भी इंग्लिश में मत पेयर कर देना उसको. हर एक इंग्लिश का भी, जैसे अंग्रेजी में अगर किसी ने बोला आई वेंट, तो सबको फील होगा कि वो पास्ट की बात कर रहा है. किस वजह से? वेंट की वजह से. ठीक है? तो आप उसको उलट पुलट करके गलत पेयर मत बना दो कि आप पास्ट की बात कर रहे हो और बोलो आई गो. उससे क्या, कौन सी फीलिंग आ जाएगी? प्रेजेंट वाली, है ना? और आप बात करना चाह रहे हो पास्ट की, तो इसीलिए पेयर सही रखना. अगर पास्ट की बात कर रहे हो, वेंट. नेगेटिव, हम नहीं गए थे पार्टी में, आई डिडंट गो टू द पार्टी. अभी क्या है, डिडंट गो तक तो फोकस चला गया, अब तुम्हारा फोकस टू द पार्टी पे आएगा. नहीं तो आप डिडंट गो पार्टी बोलते रह जाएंगे कई समय, लंबे समय तक. और मैंने क्या बोला? आई डिडंट गो टू द पार्टी. हम नहीं गए थे पार्टी में, आई डिडंट गो टू द पार्टी. तो अगर डिडंट गो पर अब फोकस नहीं करना पड़ा क्योंकि समझ में आ चुका है, तो अब एनर्जी है ना, वो एनर्जी किस पे चली जाएगी? टू द पार्टी पे. और जो अभी उधर ही उलझ रहा है, वो टू द पार्टी पे कहां से ध्यान लगाएगा? उसका तो एनर्जी चला जा रहा है डिडंट गो पे. तो इसलिए जरूरी है कि आप वर्ब फॉर्म पहले क्लियर कर लो, ताकि दूसरी चीजों पे भी एनर्जी लगा सको. एक बच्चा आपका बहुत ज्यादा परेशान है, बीमार है, डॉक्टर हॉस्पिटलाइज है, आप उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बाकी बच्चे बदमाशी करते रहेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे. वो बाहर आ जाए फिर आप दूसरे पे ध्यान देंगे. तो ये वर्ब फॉर्म अगर आपका क्लियर हो जाए दिमाग में, तो आपकी एनर्जी जो बचती है वो आप खर्च कर सकते हैं किस पे? सेंटेंस के दूसरे हिस्से पर ध्यान देने में. क्या इस बात को एहसास कर रहे हैं आप? लेकिन कुछ लोग को लगता है नहीं, बस टेंस वाइज सब कुछ, टेंस कर लेने से वर्ब फॉर्म सही हो सकता है. आप लोगों ने भी कहा आई डिडंट गो, हम पार्टी में नहीं गए थे. लेकिन कुछ लोग कहेंगे आई डिडंट गो इन द पार्टी. क्या बोलना था? आई डिडंट गो टू द पार्टी. तो अब उधर डिडंट गो से छुटकारा मिल चुका है, दिमाग में क्लैरिटी है कि हाँ भाई डिडंट गो ही तो होना है. तो अब एनर्जी जो बचा हुआ है वो जाएगा टू द पार्टी. ओके. अब इस तरह से हर एक सेंटेंस में वर्ब पे क्लैरिटी आ चुकी है, तो अब आपका एनर्जी जाएगा बाकी चीजों पे.
आप समझ रहे हो मेरी बात? लॉजिक बनती है मेरी बात में? मैं बहुत लॉजिकल इंसान हूं। मैं एग्जांपल दूं। एक आदमी के पास चार मुर्गियां हैं। कितनी? चार मुर्गियां हैं, ठीक है। और उसके हाथ में दो बाल्टी है, ठीक है, पानी से भरी हुई, ठीक है। और उसको ये साइड से, रिवर के ये साइड से उस साइड जाना है। और ब्रिज बना हुआ है, कैसे जाएगा लेके मुर्गियों को? एक बार में ही जाना है। मैं बताऊं? नहीं, वो पीने वाला पानी है, नदी का पानी वो गंदा है, नहीं पीने का। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मैं बताऊं? मैं बताऊं? देखो मैं बताता हूँ, आप ना एकदम मान जाओगे मैं बहुत लॉजिकल रैशनल इंसान हूँ। आपको, आप ठप्पा लगा दोगे मेरे पे कि सर आपसे ज्यादा दुनिया में रैशनल आदमी देखा ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं। आप एकदम अग्री कर जाओगे, ठीक है। मेरा जवाब सुनो सिर्फ। आप क्या करना ना कि आप एक पिंजरा लेना, उस पिंजरे में चार मुर्गी को रख लेना, सिर पे रख के चले जाना, ठीक है। हो जाएगा। हो गया। हाथ में दोनों बाल्टी और पिंजरे में चारों मुर्गियां लेके चल दिए। ठीक है दोस्तों। ये बेटा तुम्हारा रिएक्शन मुझे याद रहेगा। मुझे तुम्हारा रिएक्शन याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि आज या कल हम तुमको ऐसे नहीं किए तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। हाँ। हाँ। क्योंकि अभी मैंने बताया था ना कि आपको समझ आ जाएगा मैं कितना रैशनल इंसान हूं। समझ में आ गया ना दोस्तों? मेरा दिमाग कितना बढ़िया चलता है। देखा लॉजिक कितना बढ़िया है मेरा। तुम लोग नहीं जवाब दे पाए, मैंने दे दिया, बताओ कितना बढ़िया जवाब दिया मैंने। मन कर रहा होगा कि सर अगर ना होते अभी तो सब लोग मिल के आपको धुसड़ देते, ऐसा भी मन कर रहा होगा आपका। क्योंकि मैंने जो जवाब दिया उससे ही चिढ़ आएगा। अरे यार जब पिंजरा था तो तूने बोला क्यों नहीं था कि पिंजरा था? है ना? यही लगे ना, पिंजरा तो तुमने बोला ही नहीं था, फिर ये पिंजरा कहां से आ गया? ठीक है। ऐसा ही चल रहा होगा तुम्हारे जहन में। तुम लोग को अंदाजा नहीं है कि तुम लोग जब आर्ग्यूमेंट करते हो कुछ ऊट पटांग बातों पे, तो हम लोग भी ऐसे ही फील करते हैं। मैंने बस कहते हैं ना कि तुम्हारे टेस्ट ऑफ योर मेडिसिन मैंने दिया अभी, सिर्फ और कुछ नहीं साजिद। मैंने क्या किया है? टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, सुना है इस फ्रेज को? टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन मतलब जो आप दूसरों के साथ करते हैं वो आपके साथ हो जाए तो टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन हो गया। कि दूसरों को कड़वी दवाई खूब खिला रहे हो, खा बेटा तुम खुद कड़वी दवा। टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। तो मैंने अभी जो दिया है जवाब कितना लॉजिकल है, कितना सही जवाब दिया है मैंने। है ना? सही है ना? मुझे मजा आ गया। मैं उम्मीद कर रहा था कि कुछ लोग मेरे पर पूरा उलट पलट बोले, उसने बोला नहीं, लेकिन एकदम सॉलिड था। मुझे पता है यू आर वेरी लॉजिकल पर्सन, इसलिए मैंने बोला था ये। 2 दिन से मैं प्लान कर रहा हूं ये। आई बिन प्लानिंग दिस फॉर 2 days कि मुझे ये सवाल पूछना है। और सब लोग को कितना जवाब मिला मिला होगा सॉलिड, यकीन आ गया होगा कि मैं बहुत रैशनल इंसान हूँ। राइट। उसके बाद तो मेरे पर भरोसा तुम्हारा 4 गुना हो गया होगा। सर सॉलिड, सर जितना समझदार आदमी दुनिया में नहीं। पिंजरा था, बस खाली बताना सर भूल गए थे। राइट। ओके guys, moving on. So giving time to prepare for the landing. तो हमने तैयारी करी एग्जाम की, मैंने तैयारी की एग्जाम की। हाँ बस प्रिपेयर्ड। अच्छा तुम्हें एहसास होना चाहिए कि कोई वर्ब है। प्रिपेयर तैयारी करना, वर्ब जैसा लग रहा है? हाँ करना तो वर्ब है। करना मतलब वर्ब, राइट? तो प्रिपेयर मतलब तैयारी करना, ठीक है। तैयारी करना तो वर्ब है, इसका वी टू बी होगा, वो डी लगा देंगे। तो मैंने तैयारी की एग्जाम की, प्रिपेयर्ड फॉर द, फिर नहीं गया देने एग्जाम। बट देन आई डिडंट टेक द एग्जाम, बट देन आई डिडंट टेक। है ना? तो बस ऐसे ही समझते रहना पास्ट की बात। ठीक है। तुम तैयारी तो करते हो एग्जाम का, यू करते हो। कनेक्शन बनाना हमेशा वर्ब के हिसाब से रहेगा, तो तुम करते हो, प्रेजेंट की बात है, यू। तो फिर एग्जाम की देते क्यों नहीं हो? देन व्हाई डोंट यू टेक द एग्जाम? देन व्हाई डोंट यू टेक द एग्जाम? इफ यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम व्हाई डोंट यू टेक द एग्जाम? ये हो गया प्रेजेंट। ओके। हम करेंगे तैयारी।
आई विल प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, ठीक है, और देंगे भी एग्जाम। आई विल टेक द एग्जाम टू, आई विल, yes, students take the exam, okay, fine, all right. Teachers don't take the exam. Teachers give the exam, they conduct the exam, okay, all right, they conduct the exam, the students take the exam, all right guys. But the best result reaction was from the Braze. जो फीलिंग आई थी मेरे भाई तुम्हें भी, ठीक है, वो फीलिंग तुम मुझे दोगे, मैं गारंटी देता हूं, यही फीलिंग तुम मुझे दोगे, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है, मैं तुमसे एक सवाल पूछ लूंगा अकेले में, ऑलराइट। ठीक है, ओके। द ब्रेज एंड मी, गाइस, द ब्रेज वर्सेस विनय सर, ओके। बट एवरीबॉडी शुड नो, मैं फिर से बोल देता हूं, आप में से जितने को मैं ऐसे बात करता हूं एक्स्ट्रा, चाहे मैं पॉजिटिव बोलूं आपको, चाहे कुछ उल्टा पुल्टा बोलूं, आप कभी भी दिल पे मत लेना, क्योंकि मेरा सोचने का नजरिया है। मैंने अगर आपका नाम लिया है क्लास में ज्यादा देर, तो बस इतना समझ लो कि आप मेरे लिए एक स्पेशल तो हो ही गए थोड़े ना थोड़े, क्यों मैं आपका नाम ले रहा हूं इतनी बार। लेकिन कुछ लोग क्या होता है ना, मैं अपनी वाइफ के बारे में खूब मजाक करता हूँ, राइट, आई मेक फनी सेंटेंसेस अबाउट हर। समबडी आस्क्ड व्हाट वाज योर प्लान फॉर एनिवर्सरी, मैंने कहा प्लान तो है कि हम पहाड़ पे चढ़ना है और बस पुश कर देना, और क्या। तो अब ये कुछ लोग सर ऐसे बोल देते अपनी वाइफ के लिए, वो लोग बेवकूफ हैं, जिनको ये समझ नहीं आता कि ऐसा बोलने के लिए आपको बहुत ज्यादा भरोसा चाहिए, आपका और आपकी पत्नी का रिश्ता बहुत क्या होना चाहिए, स्पेशल, तभी आप ऐसे बोलते हैं। और नहीं तो सच में कड़वा हो कि आपके सच मन हो पुश करने का, लेकिन जिसका सच में को बोल नहीं पाएगा साफ 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 पब्लिकली रिकॉर्ड पे, राइट, क्योंकि कल के डेट में करना हुआ तो। ओके, ऑलराइट। तो समझदार लोग जो होते हैं ना बातों के, दे कैन रीड बिटवीन द लाइंस। इसका क्या मतलब होता है, रीड बिटवीन द लाइंस? रीड बिटवीन द लाइंस, कुछ बातें तो ऐसे ऐसे लिखी जाती हैं और कुछ बातें नहीं लिखी गई हैं, जो दो लाइंस के बीच में आप पढ़ ले रहे हैं, यानी जो बोला नहीं गया वो समझ जाना, टू रीड बिटवीन द लाइंस, ओके। आई थिंक इट्स अ ग्रेट एबिलिटी टू रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब जो बातें कही नहीं गई साफ साफ, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते, ठीक है, टू रीड बिटवीन द लाइंस, और मतलब ही समझिए ना, लाइंस लिखी हुई हैं ऐसे ऐसे करके, तो वो तो पढ़ ही लेंगे सब लोग, लेकिन जो बातें नहीं लिखी गई है लेकिन उसका मतलब वो निकलता है, वो है रीड between the lines. Got it, everyone? It's an idiom. It's an idiom. Read between the lines. Okay, fine. So not everybody has the ability to read between the lines. Hmm. Sometimes we make a mistake as well when we read between the lines. Sometimes we interpret it the wrong way, right? Okay. Prepare for, है ना? Prepare for the landing, prepare for the exam. Okay. Prepare for your wedding. Guys, are you preparing for your wedding, for your marriage? Not for your wedding. Wedding is the event. Marriage is the whole thing, the relation, the institution. So wedding is just the event. So you're not preparing for your wedding because your wedding has not been announced. So how can you prepare for your wedding? But I think everybody is preparing for their marriage. Are you guys preparing for your marriage? The boys are certainly preparing because they're studying hard, they're trying to get a job, they're trying to earn money so that they can get married tomorrow. So they are preparing for their marriage. What about the girls? Guys, did you hear about that man who committed suicide because of his wife's torture and Atul, what is his name? Oh my, what is tragic story. What a tragic story. Yes. I'm telling you, this story is not going to die just like that. This story is going to make some changes to society and to our legal system. Our legal system is so against boys, no doubt about it. आप में से कोई यहां से जाके बाहर खाली जाके बोल दो विनय सर ने बदतमीजी करी मेरे साथ, किसी ने भी, उसके बाद मेरा बच गया, तुरंत मीडिया आ जाएगी, ठीक है, बाद में सब कुछ होना है जो होना है, हाँ ना बाद में फैसला, पहले सोशल
वो क्या कह सकते हैं, बॉयकॉट, और सोशल वो क्या कह सकते हैं, ट्रायल। ओके, सोशल ट्रायल हो जाएगा इंसान का। सारे शुरू में दिखाते हैं ऐसा सल लगा, बाद में बताते हैं कुछ छूटा वो साफ निर्दोष साबित हुआ, नहीं पता चलता किसी को। यू हैव टू कैरी दैट ब्लेमिश। ओके। हम्म। एनीवेज, चलो, सैड हो सकते हैं, बट आई होप हम लोग ऐसे सिचुएशन में ना आए। मेरी वाइफ मेरे पैसे इल्जाम नहीं लगाएगी, आई होप, यू नो। या द लूनर लैंडिंग, द लूनर लैंडिंग। सो लूनर, Luna is the name of the moon in, I think, Greek, or in Greek. Luna is a Greek word, right? Luna, Luna means moon. Luna. Yeah. अरे यार, Luna for the moon. Latin word. It is not Greek. It is Latin. Okay. It is Latin. It is not Greek. It is Latin. So in the past, before English language developed, they used the word Luna for the moon. And anything related to Luna was lunar. Lunar lights means, yes, okay. Lunar eclipse. Eclipse, you know eclipse in Hindi? Do you know the word eclipse? I'll tell you. When in Hindi we call it Grahan. All right. In English, eclipse, okay. When you can't see the moon and you call it, are grahan laga hai, it is lunar eclipse and solar eclipse. All right. So solar for the sun and lunar for the moon. These are adjectives, guys. Lunar and solar are adjectives. Try and understand. Solar energy. What kind of energy? तो सोलर है ही एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के लिए समझ डेवलप करिए। ये एक ऐसा वर्ड जो ये उसका काम ये बताना कि वो कोई चीज कैसा है। तो एनर्जी है, कैसा है? सोलर है, सोलर एनर्जी। तो सोलर इज एन एडजेक्टिव। लूनर लाइट्स, लाइट, ओके, लूनर लाइट, ओके, एंड लूनर एक्लिप्स, eclipse, lunar eclipse. So lunar is again an adjective. It comes from the noun luna, okay. So lunar module, the lunar landing. I'm using some more words, okay. Lunar module, lunar landing. The lunar landing means landing on the moon, landing on the moon, okay. The lunar module, the lunar module landed, the lunar module landed on a part of the moon called the Sea of Tranquility. What is module, beta? Module word is often heard in the news. Terror module. Have you heard? A terrorist organization, and it has parts, wings. Political parties, they also have their wings, okay? So module word is used when you talk about something which is part of something else, but it can function on its own. It can, then we call it a module. Please understand. For example, there is a long course, 5-year long course, 5-year long course, okay? And then one part is 1 year long, then another part, and these are called modules because they are complete in themselves. Right now, you are doing the elementary module of the spoken English course. This is the elementary module. My course is really long, actually. Why? Because I don't believe in teaching a few things. I believe that students who are small children, these people who are here, they know very little about English. There's so much to learn. So all these things will take 3-4 years to learn. Okay. So how much can I teach in 1 year? I can teach this course. So this is the elementary module. Elementary module के बाद आप आजाद है. If you need more, then you stay and take admission in another course. And if you don't want to, you are free to
go, your course is over. Elementary module. Okay, so module मतलब होता है, पढ़ाई लिखाई होती है ना, तो उसमें भी छोटे छोटे हिस्से बना दिए जाते हैं, और एक बार में कंप्लीट हो गए, ये खत्म हो गया भाई, तो उसको मॉड्यूल कहते हैं। तो लूनर मॉड्यूल, तो द रॉकेट वेंट इनटू स्पेस, तो पूरा रॉकेट तो नहीं उतरने वाला था, इट वाज अ ह्यूज रॉकेट, इट वाज नॉट गोइंग टू लैंड ऑन द मून, ए पार्ट ऑफ दैट रॉकेट was going to detach itself from the rocket and land on the moon. So that part of the rocket will work, it will fly, right? It will be complete in a sense. अपने आप में क्या होगा, तभी तो आएगा, नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, अपने आप में कंप्लीट होगा, बट इट इज पार्ट द होल रॉकेट, तो बड़ा चीज का हिस्सा है, लेकिन अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, इस ऐसी चीजों को क्या कहते हैं, मॉड्यूल। तो द लूनर मॉड्यूल यानी वो वाला हिस्सा रॉकेट का जो रॉकेट से अलग हटके ये मून पे उतरने वाला था, लैंड करने वाला था, इसको क्या कहा हम लोगों ने, द लूनर मॉड्यूल। लूनर क्यों बोला, क्योंकि मून पे उतरने वाला था, द लूनर मॉड्यूल। गॉट इट? ओके, द लूनर मॉड्यूल, डू यू वांट टू सी द लूनर मॉड्यूल? आई विल शो यू द फोटो। ओके, I will show you the photo of the lunar module. Lunar module. The rocket was huge, okay? But this is the lunar module. The lunar module. What happened? Guys, if a mobile fell on the floor, it would definitely break. Remember that. The lunar module was not the entire rocket that went. It was just a small part of the rocket. Okay. Small means not this small. Okay. Three people were sitting in it. Okay. Remember, inside. Okay. I've just sent you the photo. Take a look. This is the lunar module. Okay. It was part of the rocket, separated itself from the rocket and landed on the moon. Did I? Oh, okay. Oh, okay. Sorry about that. Copy image. The lunar module landed on a part of the moon. Now, the moon is big. The moon is big. So, it landed somewhere. That somewhere has a name. What is it called? The Sea of Tranquility. That area is called? It's written here, the lunar module landed on a part of the moon, called the Sea of Tranquility. The lunar module landed on a part of the moon called the Sea of Tranquility. So human beings have named that part Sea of Tranquility. Now you want to know the meaning of this Sea of Tranquility? I'll try and explain. First of all, it is a name of that area where the lunar landing happened. So somebody can ask you in an exam maybe someday, what was that area where the lunar landing happened called? Yeah, it's a general knowledge question, guys. Okay, Sea of Tranquility. Now I'll explain. Now, Afia is saying, wow, you're teaching us two things, English and general knowledge. Yes, I'm teaching you multiple things, English, general knowledge, and common sense. Now, I don't want to teach philosophy. You build your own philosophy. No problems. I don't want you to follow my philosophy of life. I had a different kind of childhood.
So my philosophy is gonna be very different from your philosophy. Okay, it depends on your childhood. भाई किसी बचपन में तुमको चांद को सूरज बता दिया ना, तो फिर तुम्हें बहुत मुश्किल होगी जिंदगी भर उसको बदलने में। पॉइंट ये है कि आप कुछ नहीं जानते बिना व्हेन यू कम इनटू दिस वर्ल्ड। सो आपकी फिलॉसफी जो लाइफ की है ना, वर्ल्ड व्यू, इट डिपेंड्स वेरी हेविली ऑन व्हाट काइंड ऑफ चाइल्डहुड यू हैड। ओके, so tranquility, tranquility is a noun, okay? And tranquil is an adjective. Tranquil means quiet, silent, tranquil. A tranquil area, it means an area where there is no noise, nothing is happening, tranquil. And the quality is tranquility. Please understand. Hard, quality is hardness. Soft, adjective, the quality is softness. Similar, the quality is similarity. Similarity, okay? So similarly, there is a word tranquil. Tranquil means silent, no noise, nothing is happening, tranquil. And the quality is tranquility, shanti. All right, tranquility. So that area is called sea of tranquility. Why? I think because I think there is a reason why it is called sea of tranquility. और ये सब मैंने सिर्फ अपने अंदाजे से बताया तुम्हें। ये एक मतलब कि अंदाजे, मतलब कि मैं कोई साइंस में एक्सपर्ट नहीं हूँ दोस्तों। मेरी फिलॉसफी जो है ना, मैं कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ, कॉमन सेंस है मेरे अंदर। ठीक है, इसकी वजह से मेरे को कुछ बातें समझ में आ जाती हैं आसानी से। ओके, लेट्स सी। I have heard that there are lots of quakes on the moon. Earthquakes, you know, we call them earthquakes because they happen on the earth. So there are lots of moonquakes, not earthquakes, moonquakes. Okay, the land, vibrates, shakes. Okay, but there are some parts where that thing doesn't happen a lot. तो वहां क्या है? Tranquility, शांति, sea of sea area, right? Sea of tranquility. अब समझ में आया क्यों नाम उसका रखा होगा sea of tranquility? वहां सिस्मिक एक्टिविटीज नहीं होते होंगे ज्यादा, मतलब वो हलचल अंदर जमीन उसके अंदर नहीं होता होगा ज्यादा। That's why it was safe to land there. If they wanted to land on the moon, they had to ensure that that was a safe area. And that's why it didn't happen overnight. They sent many Apollo missions. Apollo 11 took the astronauts. It means there were 10 more attempts before that. Apollo 1st, Apollo 2nd, Apollo 3rd, and so on. So through these missions, they learned so much about space, the moon. They learned so much about the surface. They learned which area would be safe to land. And then finally, in Apollo 11, with Apollo 11, they landed there. Okay? No, you're not sleeping at all. You're not sleeping. Ayat, she's not sleeping. Understand? Ayat, she's not sleeping. Okay. So now you're not sleeping. Okay. But I know your energy is great, Inaya, most of the times. Till date, I think 2-3 times it has happened that they have fallen asleep. Only 2-3 times. Look at their age, how young they are, and how many difficult topics sometimes we touch here. So if they have managed to doze off, sometimes we can't blame them because they're young kids. They can't be really interested in all the things we discuss. Okay, the sea of tranquility. पता है मैंने कोई किताब में नहीं पढ़ा कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी सोर्स नाम पढ़ा होगा। इसको कहते हैं जब आपकी लैंग्वेज सेंस हो जाए बढ़िया, तो आप कनेक्ट करने लगते हैं डॉट्स। ये भी मैंने पढ़ा है, लेकिन दैट देयर आर लॉट्स ऑफ मूनक्वेक्स। Moonquakes are more frequent than earthquakes. Let's Google. Okay, are moonquakes more frequent than earthquakes? Are moonquakes more frequent than earthquakes? Moonquakes are more frequent than earthquakes. No,
moonquakes are less frequent and have smaller magnitude than earthquakes. Okay, less frequent. But that area was sea of tranquility because the moonquakes were not happening there. That's why that area was called sea of tranquility. Yes, that's my guess. The lunar module landed हुआ तो लैंड हो गया कि लैंड होता है, और लैंड होता है तो उतरता है तो लैंड्स, बस यही समझना आपको, और उतरेगा will land. Okay, the lunar module landed on a part of the moon called the Sea of Tranquility at 8:17 in the evening on the 20th of July. In the evening on the 20th of, it was time for the astronauts to rest. It was time for them to, it was time for them to, it was time for the astronauts to, the 3 astronauts who went, it was time for them to sleep, to rest. Okay, it was time for them to rest. Imagine you were there. You were the 3 people, one of the 3 people, and you landed there at 8:17. And according to your schedule, they have a routine now. इतने से ऐसे करना, ऐसे करना, फिर इतने बजे रेस्ट करना. According to the schedule, it is time for you to rest. अब आप क्या करेंगे? सोने चाहेंगे? रूटीन नहीं फॉलो करोगे, चैलेंज कर दोगे, जंप मार जाओगे. अरे गंगा नदी में छलांग मारना है कि चलो पहुंच गए, तैर लेते हैं, ऐसे नहीं है. तो यू हैव टू फॉलो द, या तो हो गया. फिर आप जाएंगे रेस्ट करने, आपको नींद आ जाएगी? कहीं नहीं आएगी. यस रानी, क्यों नहीं आएगी? जल्दी जवाब दो. हाँ, बस ये मेरा सवाल हमेशा ही रहता है, एक्साइट, ये कॉमन सेंस वाला. चांद पे गए हो फर्स्ट टाइम, कहां से नींद आएगी? लगेगा जल्दी से उतरे. भले ही नहीं उतरोगे लेकिन कोशिश करोगे, सो नहीं पाओगे, रेस्ट नहीं हो पाएगा, राइट? चिल्ड्रन, do you find it easy to sleep when it is your birthday next day? A lot of children can't go to sleep because they eventually go to sleep, but they keep talking about it. It's my birthday tomorrow. It's my birthday. And they're so excited, they find it difficult to sleep. When your body is excited, you can't go to. When the class is boring, it means not much is happening in your mind and you. But when you are excited, when the information that is coming your way is exciting, you can't fall asleep. You'll be wide awake. Okay, so it was time for the astronauts to rest. अब ये रेस्ट वर्ब है, टू रेस्ट, आराम करने का टाइम था. इट वॉज टाइम फॉर द एस्ट्रोनॉट्स टू रेस्ट, आराम करने का वक्त था. भाई ये मेरे सोने का वक्त है, फोन रखो, अभी बाद में बात करेंगे. इट इज टाइम फॉर मी टू, या माई टाइम टू रेस्ट. इट इज माई टाइम टू स्लीप, है ना? वी विल टॉक लेटर, पुट द फोन डाउन. भाई अभी ना फैमिली के साथ बात करने का टाइम है. इट इज माई टाइम टू स्पेंड विद माई फैमिली. ओके, इट वॉज टाइम फॉर द एस्ट्रोनॉट्स टू रेस्ट. इट वॉज टाइम फॉर द एस्ट्रोनॉट्स टू रेस्ट, बट दे वर टू एक्साइटेड टू स्लीप. दे वर टू एक्साइटेड टू स्लीप. अब इसका हिंदी निकालो. दे वर टू एक्साइटेड टू स्लीप. हंसे, हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है आपको, ठीक है? वही सही है जो मैंने पहले बताया. They were too excited to sleep. मतलब वो लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि, हाँ, इसका कभी कुछ लोग निकाल लेते हैं ना कि वो they were too excited to sleep, एकदम सोने के लिए परेशान थे. नहीं नहीं नहीं, वो बोलने के लिए आपको टू की जगह वेरी बोलना पड़ेगा. ये तो मैंने फर्क बताया आपको, याद करिए, मेरी बात सुनिएगा. T-O-O-2 मतलब जरूरत से. They were too excited, इतने एक्साइटेड थे कि नींद नहीं. They were too excited to sleep. Okay? अगर आपको बहुत एक्साइटमेंट है कोई बात के लिए तो आप बोलते हैं वेरी एक्साइटेड अबाउट समथिंग. प्लीज अंडरस्टैंड. सपोज कल आपको पटना जाना है जू,
मम्मी पापा लेके जा रहे, बहुत आई एम गोइंग टू पटना जू, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट, आई एम। फिर किसी ने पूछा व्हाट आर यू एक्साइटेड अबाउट, आई एम एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू पटना जू, आई एम एक्साइटेड अबाउट, आई एम एक्साइटेड अबाउट सीइंग द लायन। ओके, तो आप समझ गए, ये होता है कोई काम के लिए एक्साइटेड होना, करेंगे करेंगे मजा आएगा, लाइक दैट। ओके, और ये क्या है, टू एक्साइटेड टू स्लीप, दे वर टू एक्साइटेड टू स्लीप। दूसरा सेंटेंस सुनिएगा, दिस बैग इज टू हैवी टू मूव, दिस बैग इज, it means this bag is so heavy I cannot move it. All right, sir, your lesson is too difficult to understand, sir, your lesson is too difficult to understand। इसको दूसरा शब्द में बोल रहा है, sir, your lesson is so difficult that I can't understand it, your lesson is so difficult that I, अब टू से बोलो, your lesson is too difficult to, जरा सुनना, somebody brought you tea and you are not drinking, so they ask, why are you not drinking, it is so hot that I cannot drink। अब इसको टू से बोलो, it is too hot to drink, it is too hot to drink, it is so hot that I cannot drink, it is so hot that I cannot drink, it is too hot to drink। Got it? All right, मजा आया? चलिए और सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। She is so proud, घमंडी, okay, she's so proud that she cannot accept her mistake, she's so proud that some people have that attitude, they don't accept their mistake, she's so proud that she cannot accept her mistake। इसको टू से बोलिए, she is too proud to accept her mistake। अब इसको बिना टू के बोलिए, she is so proud that she cannot accept her mistake। All right, I hope you understand। अरे बहुत बीमार रहा था ना, अब इतना दुबला हो गया ना, इतना कमजोर हो गया, चल भी नहीं पा रहा है बचवा एकदम, तो अभी कहाँ से क्लास जाएगा, कैसे बोलेंगे, ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक, कांट गो टू द क्लास, ही कांट वॉक, ही कांट गो टू द क्लास। अब इसको टू से बोल दीजिए, ही इज टू वीक टू गो टू द क्लास, he is too weak to go to the class। दोनों सेंटेंस समझ में आ रहे हैं? तो यहां लिखा है, they were too excited to sleep, they were so excited that they could not sleep, they couldn't sleep। At 3 in the morning, guys, at 3 in the morning on July the 21st, Neil Armstrong became the first man to walk on the moon। It was 3 a.m. in the morning, 3 a.m. on July the 21st, Neil Armstrong became the first man to walk on the moon। Neil Armstrong became the first man, हिंदी से इतने से हिंदी निकल गई, नील आर्मस्ट्रांग बन गया पहला इंसान, नील आर्मस्ट्रांग became the first man, he became the first man to walk on the moon, he became the first man to walk on the moon। Got it? Yeah। सचिन तेंदुलकर ने जब वो छक्का लगाया तो वो पहला बैट्समैन बन गया जिसने वनडे में 200 रन बनाए थे। So when Sachin Tendulkar hit that six, he became the first cricketer, first batsman to score। देखना यहां पर है टू वॉक, फर्स्ट मैन के बाद क्या लिखा बेटा, फर्स्ट क्रिकेटर to walk, no, not to walk, to score double century in one-day cricket। He became the first man to score what do you think about Sachin Tendulkar? He was, I don't know if you guys have seen much of Sachin Tendulkar. Did you see a lot of Sachin Tendulkar batting, guys? Oh, so unlucky you were. Oh my God. Oh my God. You
You guys are so unlucky. You didn't see Sachin Tendulkar batting. Oh, तुम्हारा क्रिकेट देखना बेकार है. No, Virat Kohli can compare with Sachin Tendulkar. It was like dance on the pitch. You know, a classical dancer has some rhythm to their body, you know, when they dance. So when Sachin Tendulkar batted, you know, against fast bowlers, spinners, it was like a dancer on the pitch. Beautiful. Every stroke he played, every shot he played, you know, it was like he was dancing there. So much of rhythm. You will not see many of his shots where he is trying to put a lot of power. You will see something about his body that will attract you about his batting. There are some, you know, videos available on YouTube. Oh my goodness, you know, Sachin Tendulkar. Um, he was the first man who scored a double century. He was the first man to score a double century. He was the first man who scored a double century in one-day cricket. Okay, I can't tell you how much you have missed him batting against Australia, him batting against, you know, this guy, Shoaib Akhtar against Pakistan. Those matches are still fresh in my memory. You know, two matches, back-to-back centuries, semi-final, final against Australia. Poor guy could not win a World Cup until 2011. He played many World Cups and he played exceptionally well. But when he was in the team didn't have many good bowlers and there were only a few good batsmen other than him. Okay. So he was more like Brian Lara of Pakistan, you know, sorry, West Indies. He alone was the hero, you know. So Sachin Tendulkar was the lone hero of the team. Today we have 6, 7 match winners in our team. Anyone can win the match. You have Bumrah, you have Siraj, you have Rahul, you have Rohit Sharma, you have Virat Kohli, you know, you have Surya Kumar Yadav, you have Hardik Pandya. Any one day one can click and the team wins the match. So back then it was not like that. Mostly it was Sachin Tendulkar. When Sachin Tendulkar got out, most of us lost interest. अब कोई फायदा नहीं. Okay, we watched cricket only because of him. Slightly chubby guy, not a muscular body, but the way he batted. आपने कभी मोटे आदमी को डांस करते देखा होगा, सुंदर तरीके से डांस करते हुए. वो it was like dance. Again I said, you know, beautiful. देखना कोई वीडियोस की against Australia and against Pakistan mainly. Okay, amazing. And so innocent looking, you know. My favorite when I was young, you know. Now I like Rohit Sharma, but he was my favorite. Yeah, Rohit Sharma reminds me of him. Rohit Sharma also has that, you know, lazy elegance, we call it lazy elegance. मतलब लगता है कि ऐसे ऐसे ही कर रहा है और बहुत रन बनाता है, राइट? कभी लगेगा नहीं जैसे बहुत हड़बड़ी में है. लेजी एलिगेंस. एलिगेंस मतलब जो आपको लुभाए, उसमें लगे कि वाह क्लास है, एलिगेंस. ओके, और वो भी लेजी एलिगेंस, मतलब लगे जैसे कि पता नहीं वो धीरे से खेल रहा है. कभी कभी आउट होता है तो बड़ा सिली लगता है वो. लगता है जैसे कि उसको खेलना ही नहीं आता. बट द वे ही स्कोर्स रन्स, यू नो, रोहित शर्मा. So after Sachin Tendulkar, my favorite as a batsman is definitely Rohit Sharma. Yeah, I like Virat Kohli. He's amazing, but my favorite is Rohit Sharma. You guys are Virat Kohli fans here? Rohit Sharma fans? Oh, there are a few. There are a few. Okay, good. Yeah. Okay. Kapil Dev was the first Indian captain to win the World Cup. I am the only in Bihar Shift teacher. I'm the Bihar Shift teacher who taught or who has taught foreign students in his class. Right? Right? इसको 2+V1 से बोलो जैसे यहाँ लिखा. I'm the only teacher in Bihar Shift to teach foreign students and earn dollars from them for the country, right? Okay. Not a lot, थोड़ा बहुत ही, लेकिन चलो. भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में मैंने भी अपनी कंट्रीब्यूशन दी है दोस्तों. ज्यादा नहीं, 2-4 हजार डॉलर्स का, ज्यादा नहीं. यस. ना 2-4 हजार नहीं, ज्यादा दिया यार.
लेट मी थिंक, $10,000 हो गया होगा, हाँ क्या ही होगा, इतना तो चला गया होगा। ऑल राइट। हम्म। तो बताना नहीं था। ओके। But by the way, I've paid taxes as well because all the money I get in my account is minus taxes. Okay. First, PayPal takes the taxes, then it puts the money into my account. And then if I qualify for the other taxes, I have to pay other taxes as well because it all comes in my bank account. Yeah. Anyways, क्या बोले भाई? हैं? 8 लाख जोड़ लिया? अरे वाह। ओके। नेक्स्ट, it was time for the astronauts to rest, but they were too excited to sleep. At 3 in the morning on July the 21st, Neil Armstrong became the first man to walk on the moon. He became the first man to walk on the moon. 600 million people all over the world watched on TV. वो अपने गांव में पहला लड़का था जिसने मैट्रिक किया, ऐसे बोलते हैं ना। He was the first boy in his village to pass matric. To pass matric से काम चल जाएगा। अब चाहे तो who से भी बोल सकते हैं, who passed matric, लेकिन ज्यादा नेचुरल है, he was the first boy in his village to pass matric. तुम मैं आखिरी इंसान था जिसने मतलब मैं आखिर में रेस फिनिश किया। I was the last guy to finish the race. I was the last guy to finish the race. Okay? Okay, मेरे बाद कोई नहीं था। I was the last guy to finish the race. Okay. Who was the last student to come to class today? Who was the last student to come to class today? It was Atif. Atif was the last guy to come today. Yeah. And who was the first? Inzamam is always the first, right? Inzamam. And I'm glad that you followed my advice and follow my advice, that advice I gave you. Okay. Very important. Yes. Okay. Neil Armstrong became the first man to walk on the moon. और कुछ बोलना है? Indira Gandhi was the first woman to become Prime Minister of India. पहली औरत थी जो भारत की प्रधानमंत्री बनी. And the last, right? She was the only woman to become Prime Minister of India. थोड़ी प्रैक्टिस करोगे या कहानी सुन के चले जाओगे? होगा क्या कि आप में से कुछ का दिमाग बहुत शार्प है, वो तो चिपका लेंगे, बात स्टिक कर जाएगी, बाकी मेजॉरिटी के दिमाग से निकल जाएगी 2-3 दिनों में बात। तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना अपने ही घर परिवार में कि मेरी फलना दीदी पहली लड़की है जो लव मैरिज की है, ठीक है? ऐसा होता है ना, तो बोल दिए पहली लड़की है जो लव मैरिज की। माई XYZ दीदी और कजन इज द फर्स्ट गर्ल टू डू लव मैरिज, राइट? या फलना दीदी मेरे परिवार में पहली लड़की है जो सरकारी नौकरी ली है, ऐसा भी बोल सकते। इजी इजी सेंटेंसेस। XYZ दीदी इन माय फैमिली इज द फर्स्ट गर्ल टू get a government job, to get a government job. All right. हाँ, so आप ऐसे बोल सकते हैं, I was the first guy in my family, I am the first guy in my family to pass matric in first division. Okay. No problem. Huh? Everybody else got the second division. Yeah. मेहनत करिए, और आपके भाई, आप और आपके भाई दोनों में गजब का दिमाग है, आप लोग का दिमाग बहुत अच्छा है। ये मैं बता दूं, ये दुनिया ना फेयर नहीं है, ये दुनिया जो है कहीं से भी फेयर नहीं। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ दोस्त। ऐसा क्या है कि किसी बच्चे का दिमाग 5 साल की उम्र में ऐसा होता है कि उसको टीचर ने जो बताया आज, वो कल उसको पूरा याद रहता है। कुछ नहीं करता वो बच्चा, जाके घर में खेलता है 5 साल का बच्चा, उसको वो सारी बातें याद रहती है जो कल टीचर ने बताई थी। और दूसरा बच्चा जो जाके घर 5 घंटा 2 घंटा देखता भी है, फिर भी आता है तो आधा ही याद रहता है उसको। ये उसमें से की क्या गलती थी भाई? कैसा क्यों रखा उसका दिमाग?
तो इस दुनिया ही फेयर नहीं, नेचर ही फेयर नहीं, आपको बनाया नहीं गया बराबर, सबसे पहली बात। तो फेयरनेस की उम्मीद मत करिए, बस आप अपने तरफ से लोगों को थोड़ा सा बढ़िया ट्रीट करिए, बाकी आपके साथ हमेशा सही होगा ये मत सोचिए। पहली गलती है उस लड़के की, क्या गलती है भाई जो स्ट्रगल कर रहा है? ठीक है, हम अभी आप लोग बड़े हो गए तो आपने टाइम वेस्ट कर दिया, मैं मानता हूँ। 4-5 साल वाले बच्चों की क्या बात करें जो अभी पहला दिन स्कूल ही गए, आज ही इस टीचर ने ABC सिखाया, एक को तीनों याद रह गया, और वो उसने कुछ नहीं पढ़ा था घर पे जाके, और एक कोशिश भी किया तब पर भी टेढ़ा लंगड़ा ABC लिखा है, उससे अच्छा नहीं लिखा है। बताइए क्यों? उसकी क्या गलती है भाई? और वो जिंदगी भर इसके साथ स्ट्रगल करेगा। वो लड़का जो तुरंत निकल गया आगे, वो हमेशा वैसा ही रहेगा, उसका दिमाग ही वैसा चलता है। तो आप मानते हैं ना कि अलग अलग लोगों का दिमाग अलग चलता है, ये दिमाग आपने खुद खुद से चुना है, तो फिर नेचर इज नॉट फेयर। ओके, आप सब एक जैसे नहीं। और भी आगे लीजिए एग्जांपल्स। एक भाई के नाक नक्श ऐसे हैं कि जो देखे उस पर मोहित हो जाए, राइट, और दूसरे भाई का नाक नक्श ऐसा है ना कि लोग उसको ज्यादा पसंद ही नहीं करते शक्ल देख के। उसमें क्या गलती है उसकी भाई? उसने चुना था अपना नाक नक्श। दोनों एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, और जहां जाए उसको सब लोग प्यार से देखते हैं, सब लोग गोद में लेना चाहते हैं, सब लोग उसके साथ बात करना चाहते हैं। उसकी आवाज भी बड़ी मीठी है भाई, बोलता है तो लगता है जैसे अच्छा लग रहा है सुनने में, और दूसरा है उसकी आवाज थोड़ी कड़वी है, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। उसने चुना वो आवाज अपने लिए। तो दिस वर्ल्ड इज नॉट अ फेयर प्लेस। तो उम्मीद ही मत करिए कि कुछ फेयर होगा, यहाँ सही होगा। बट ये कर सकते हैं कि अपने तरफ से कोशिश करिए कि आप लोगों को अन्यथा अननेसेसरीली हर्ट ना कराएं फील। जब मजबूरी है तो कराना ही पड़ेगा भाई, राइट, बट अननेसेसरीली आप ना करें, दैट्स ऑल यू कैन डू। ओके, क्या ये समझने के लिए हमको साइंस में मास्टर्स डिग्री चाहिए जो मैंने अभी बात बोली? क्या चाहिए? बस बुरा करोगे तो बुरा होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। उसने पैदाइशी बुरा कर दिया था कुछ, बेचारे की नाक मोटी हो गई और लोग उसको मोटा नाक की वजह से उसका कम पसंद कर रहे हैं। और लोगों का क्या गलती भाई? अच्छा लगता है गुलाब के फूल आप ज्यादा देखते हैं कि नहीं? झाड़ झंकाड़ को ज्यादा देर क्यों नहीं खड़े होकर निहारते रहते? क्यों नहीं करते आप ऐसा? क्या ही है ऐसा आपके अंदर कि आपको गुलाब की तरफ आकर्षण ज्यादा होता है देखने में? यार बहुत सुंदर लग रहा है, देखते रह जाते हैं उसकी तरफ, नजरें रुकी रह जाती हैं। ऐसा होता है ना आपके साथ? वाई? वही बगल में झाड़ी है, एक नजर आप देखते हैं उसका, मूव ऑन कर जाते हैं। इसमें आपकी भी गलती नहीं कि आप उसका मोटा नाक देख करके थोड़ा सा कम उस पे ये, क्योंकि ऐसे ही बना है आपको। विजुअली आप स्टिमुलेटेड होते हैं, कुछ सर्टेन कॉम्बिनेशंस हैं, रेशियोज हैं, प्रोपोर्शंस हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं। एक आदमी की शक्ल लीजिए, आज के डेट में पॉसिबल है, ऐप के सहारे उसके नाक को थोड़ा लंबा करिए, उसके होंठों को थोड़ा मोटा करिए, देखिए आपको अच्छा नहीं लग रहा वो देखने में? कि प्रोपोर्शंस बदल गए हैं। क्या बदल गया? प्रोपोर्शंस, जो जिस प्रोपोर्शन में था वो अब वो चेंज हो गया, अब अच्छा ही नहीं लग रहा। There are some animals' faces. They are very, very dangerous animals, but you look at them and you love them because the proportions are amazing. And there are those animals which are cute, cute in a sense they don't harm you, but आप देख के उनको घिनाओगे, उनके proportions ही खराब है। तो ये proportions का खेल है, कैसे कितनी बन रही proportion हमारे आंखों को अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। तो everything is unfair। इसका मतलब ये नहीं कि हम उस अनफेयरनेस में और कंट्रीब्यूट करें। कोई चीज पहले ही घर में खराब है तो और खराब करते जाएं, दीवार गिर रही तो उसको गिरा दे। तो वैसे ही है कि दुनिया अनफेयर है। नाउ इट इज अप टू यू कि आप इस अनफेयर दुनिया में कैसे हैंडल करते हैं, कैसे चीजों को रखते हैं, सम देखते हैं। आप उसका नुकसान करते बाकी लोग का, या थोड़ा समझ के चलते भाई तू भी खुश रहे, मेरे चलते अगर हो सकता है खुश तो। ये मेरी फिलोसफी चली गई एक्स्ट्रा, है ना? ये माई इट वॉज माई फिलोसफी, डोंट हैव टू अग्री विद इट, यू डोंट हैव टू, जरूरी नहीं कि आप माने। देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग became the first man, वो पहला आदमी बन गया to walk on the moon. 600 million people. How many people? 600 million people all over the world watched हिंदी, watched हिंदी, देखा, बस वर्ते के साथ कहिए, देखा, देखा, watched। यहां पर देखा कि देखते थे? मतलब कि टोन पे जवाब चाहिए, यही चीज है। मैंने कहा अब इसकी भी क्या गलती है, हाँ? ऐसे ही है।
दिस वर्ल्ड इज नॉट अ फेयर प्लेस। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें शक्ल अच्छी दी है ऊपर वाले ने, कंपेंसेट हो जाएगा। अफरीदी, योर फोटोज आर अमेजिंग ऑन टेलीग्राम। आई मीन हाउ मेनी गर्ल्स डू यू से नो टू एवरी डे? कितनी लड़कियों का ना बोलते हो हर दिन? 4-5 को तो रोज ना बोलना पड़ता होगा। इसको कम से कम 4-5 मैसेज आते होंगे, भाई नहीं, भाई नहीं बोलती होंगे, सॉरी। विल यू बी माई फ्रेंड? ये बोलता होगा रुक अभी टाइम नहीं है, वे तैयारी कर रहे हैं मेडिकल की। राइट आफरीदी? कितने लोग का दिल तोड़ते हो रोज तुम? हाँ, डजन अ डे? A dozen a day? Half a dozen a day. Okay. And he's shy. Look at him. He's not even looking at me when I'm talking about it. Okay. लेकिन दिमाग चलाओ, क्योंकि वो भी जरूरी है। ठीक है, वो भी जरूरी है। वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। बेटा ऐसे जवाब नहीं दे देते बिना सोचे समझे, गलत बात। गाइस मैंने कहा यहां पर क्या बोलेंगे? टू हाउ मेनी मिलियन पीपल? 600 मिलियन पीपल वॉच्ड। हिंदी में क्या बोलेंगे? राइट हाँ, क्योंकि एक दिन की बात है ना जब हुआ था, तो राइट वॉच्ड, देखते थे, कैसे बोलेंगे? ये बार बार की चीज थी। दे वॉच्ड, ओके। 600 मिलियन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड वॉच्ड ऑन टीवी as Armstrong took his first steps. Armstrong, हाँ, he took his first steps. कुछ कहेंगे फर्स्ट तो एक होता पहला, तो स्टेप्स कैसे हो गया प्लूरल? तो फर्स्ट का दो मतलब होता है, एक पहला, और फर्स्ट मतलब शुरुआती भी होता है। फर्स्ट स्टेप्स शुरुआती कदम, मतलब 2-4 कदम जो शुरू वाले लिए ना, उसमें फर्स्ट स्टेप्स। As Armstrong took his first steps, he said the famous words. He said the famous words. That's one small step for man, one giant leap for mankind. अपने कदम पैरों के बारे में बोल रहा है, वो चल रहा है और बोल रहा है That's one small step for man. That's a small step for man. One giant leap for mankind. Leap means jump. Giant means very, very big, huge. A giant leap for mankind. Mankind means human beings. Bhai, millions of years we were on Earth, and then we got onto the moon. Suddenly, right? One day we were on the moon. Bhai, क्या हुआ? क्या हुआ? So that was a giant leap for the mankind. आदमी धरती से चांद पे छलांग लगा गया। One small step for man, वो चल तो रहा है, one small step for man and a giant leap for the mankind. अब समझ में आई इसकी बात का मतलब? Who said these famous words? He said the famous words. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Leap means jump, all right? And giant means huge, very big. Mankind means human beings, okay? What do you want to do for mankind? Okay? Do you want to spend your life serving the mankind? Serving the humanity? Of course. Okay. हाँ, घर में खाना बना जाए उसके बाद, right? Of course, first you have to fulfill the family responsibilities, and then you want to serve the society. Okay. So we are done here. We will finish the last part tomorrow. And question answers, तुम्हें खुद देखना है कि समझ में आ गया तो आंसर क्या होने चाहिए. Guys, will you do the question answers? I'll see you guys tomorrow.